Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. We were discussing contour integrals. In the previous some lectures, we discussed definition of contour integral, some examples of contour integral. In this lecture, we are going to identify some upper bound for modulo of contour integral. Okay, this is the section number 47 of Brown and Churchill book. So let us start this lecture by writing a lemma, and then we will come to the main theorem of this particular lecture. Okay, so we are starting this lecture by writing a lemma. Lemma says if Wt is a piecewise continuous complex valued function defined on an interval a less than equals to t less than equals to b, then we have the following. This is very important lemma. So it says that modulus of integration from a to b wt dt, the modulus of this integral, or precisely the real integral, is less than equals to integral of modulus of omega t dt. Okay, so it is saying that modulus of integral is always less than equals to integral of modulus. Okay, so this is about the real variable t and the real integral from a to b. Now here function is complex valued. This omega t function is complex valued of real variable t. Okay, now let us try to prove this, and the proof is quite simple but yet some kind of constructive. So the proof says, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स वैल्यूड को सपोज करना है, सो हम कैसा भी कोई ना कोई तो नंबर आएगा ही, है ना, तो हम इस नंबर को सपोज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड में. ठीक है, सो लेट ओमेगा टी बी the given complex valued function of real variable t, where t is lying between this interval a to b. ठीक है, also let whatever the integral is, that will be a complex number. So we are supposing that integral from a to b of omega t dt is equals to, say, r naught e to the power iota थीटा नॉट. ओके, क्योंकि ये एक फिक्स्ड इंटीग्रल है फ्रॉम द लिमिट ए टू बी, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और हमने वो कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिया दैट दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, देन फ्रॉम दिस वी कैन से दिस इम्प्लाइज, अगर हम इसका मॉड्यूलस वैल्यू आइडेंटिफाई करें तो ए टू बी ओमेगा टी डी टी, what is the modulus of this one? That will be equals to modulus of r naught e to the power iota theta naught, right? और इसका मॉड्यूलस हमें पता ही है, द मॉड्यूलस ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इज r naught. ओके, which is equals to r naught. So this is suppose say equation number 1. ठीक है, now we want to bound this one कि ये r naught किस पर्टिकुलर नंबर से बाउंड है. ठीक है, now again from this equation we can write r naught as integration from a to b, and then we can multiply by e to the power minus iota theta.
Okay, let me write this is equation number 2 and this is equation number 1. Okay, so I can say from 1 we have that r naught is equals to e to the power minus iota theta naught integration from a to b omega t dt, right? Now since this is the constant for this integral, because यहाँ पे जो t है वो वेरी कर रहा है a से b में, और इसका ये एक कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज थीटा नॉट इज सम काइंड ऑफ फिक्स्ड नंबर. ओके, सो वी कैन से कि ये कांस्टेंट जो नंबर है इसको हम इंटीग्रेंड के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, e टू द पावर माइनस आइटा theta naught. This is a complex constant only. Okay, omega t dt. Okay, now since this e to the power minus iota theta naught omega t dt, look at this number. Okay, we are having the integral of a complex valued function omega t, but the variable is t, which is the real number. But look at the left hand side, this is r naught and r naught is a real number and that real number is equal to this particular integral. इसका मतलब ये भी एक real number ही होना चाहिए, right? So we are here that since r naught is रियल नंबर, ओके, और प्रिसाइजली क्योंकि आर नॉट जीरो हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं होता है, सो वी कैन से दिस इज द पॉजिटिव नंबर यूनियन विथ जीरो ओनली. ओके, तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है देन देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b e to the power minus iota theta naught omega t dt is also a रियल नंबर. और जब हम रियल नंबर का रियल पार्ट आइडेंटिफाई करें, जैसे हमने लिखा z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा थीटा, then x is nothing but the real part of z, okay, and y is the imaginary part of z. But what if this z is a real number? That means the imaginary part is 0. सो दैट नंबर, वो जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज, अगर वो रियल हो जाता है तो अपने रियल पार्ट के इक्वल ही होगा. ठीक है, सो आई कैन से एंड दिस विल इम्प्लाइज दैट रियल पार्ट ऑफ this particular number a to b e to the power minus iota theta naught omega t dt, the real part of this number, क्योंकि ये रियल नंबर है तो इसका रियल पार्ट इसी के ही इक्वल होगा. सो इट्स रियल पार्ट इज इक्वल टू e to the power minus iota theta naught omega t dt only. Okay, so in this particular equation, let me denote this equation is 3. So in equation number 3 we can replace this number by the real part of this one. Okay, so we can say, so from 3 we can write that r naught is equal to real part of integration from a to b of e to the power minus iota theta naught omega t dt. Okay, now दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहाँ पर ये रियल नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में और ये रियल पार्ट है. अगर हम मॉड्यूलस की बात करें किसी भी नंबर के रियल पार्ट के लिए, तो हम रियल मतलब किसी भी रियल नंबर के रियल पार्ट की बात करें तो वापस वही नंबर आएगा. और इसी कंसेप्ट को जब हम इंटीग्रेशन में देखें तो क्या कहेंगे, दैट रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ रियल पार्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई रियल पार्ट ऑफ सम इंटीग्रेशन, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द रियल पार्ट. Okay, so this is the equality we are having, which is equal to, let me write, integration from a to b of real part of e to the power iota minus iota theta naught, this is theta naught omega t dt. Okay, what we have used here, real part of integration is same as the integration of real part. Okay, now look at this particular property. If I want to identify the modulus of this number, then
सी जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, सपोज z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y, okay, then what about modulus? Modulus is square root of x square plus y square, okay. तो जब हम रियल पार्ट पे फोकस करें तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, तभी तो ये मॉडुलस ऑफ जेड आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब अगर ये वाई स्क्वायर या फिर वाई की वैल्यू जीरो होती तो मॉडुलस ऑफ जेड एक्स के इक्वल ही होता। और मोर प्रिसाइजली हम क्या कह सकते हैं, दिस विल इम्प्लाइज दैट जो भी इसका रियल पार्ट है जेड का, दैट इज ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, एंड सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑल्सो लेस एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। ये क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इसका मॉडुलस देखेंगे z अगर x प्लस आइटा y है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में कुछ ऐड होके मॉडुलस ऑफ z बन रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से तो बड़ा या बराबर ही हो सकता है। इन केस बराबर कब होगा, जब y जीरो होगा, अदरवाइज तो ये ग्रेटर देन ही होगा हमेशा। ठीक है, सो वी हैव दिस इनइक्वलिटी। तो इस इनइक्वलिटी को अगर हम यहाँ यूज करें, बिकॉज वी आर हैविंग सम रियल पार्ट, सो लेट मी डिनोट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ what we are having now, the real part of this integration e to the power minus iota theta naught omega t till the omega t only, okay, omega t। अगर हम इसके रियल पार्ट की बात करें, सो वी कैन से द रियल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ऑलवेज लेस एंड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ दिस रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज e टू द पावर माइनस आइटा थीटा नॉट ओमेगा t। And from the modulus property we know that modulus of two complex number or product of two complex number is the product of their modulus, so we can write e to the power minus iota theta naught modulus time modulus of omega t, and we know what is e to the power minus iota theta naught, the modulus of this number is 1, so this is equal to modulus of omega t. So particularly we can say the real part of this particular number is less than equals to omega t. Okay, now since here we are talking about the real integral or the real number, यहाँ पर r नॉट भी रियल नंबर है और ये भी एक रियल नंबर है, हम ये कह रहे हैं यहाँ पर जो भी इंटीग्रेंड है दैट इज लेस देन इक्वल टू सम काइंड ऑफ अनदर फंक्शन। तो इंटीग्रल भी सेम प्रॉपर्टी फॉलो करेगा बिकॉज दिस इज द इंटीग्रल ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सो लेट अस राइट देन from equation number 4 we are having that r naught is less than equals to integration from a to b of modulus of omega t dt। okay, we are using the property of real integral here a to b, क्योंकि ये रियल इंटीग्रल है। अब पहले ओमेगा टी ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन था, लेकिन जैसे ही हमने उसका मॉड्यूलस लिया तो वो अब एक रियल नंबर बन गया है, और जैसे ही हम इसको रियल नंबर्स के जैसे ट्रीट करेंगे, दिस इज अ रियल फंक्शन, दीज आर द रियल लिमिट्स एंड दिस इज द रियल वेरिएबल, सो दिस इज अ रियल इंटीग्रेशन, सो वी कैन apply this property here. Now what was the r naught from the equation number 2? We know that this is nothing but the modulus of integration from a to b of omega t dt. okay, that was the r naught, which is from this equation is less than equals to a to b omega t dt. okay, modulus of omega t dt, this is from equation number 2. okay, and hence we have proved the given statement. so ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रहा है कि जब भी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है ऑफ रियल वेरिएबल, then we have this property about the modulus of integral. So it says that modulus of integral is less than equals to integral of modulus. okay, so let me mention this line. So it is saying that modulus of integral is
less than equals to integral of modulus.